video. Today I will start with exercise 2.5 of linear equation in one variable. Today we'll see some new kind of question. Let's start from question. Now the equation is given in the form of fraction. Earlier you have done question without fraction. So today we'll solve question with fraction. You know very well, if there is a fraction, how can you simplify? You can subtract, you can add whatever you have given. It is your first step, right? Or if you want separate variables and constant at first, then you can do. Let's start. At first we will separate constant and variables. It is variable, both are variable. So we will take them together. X upon 2 minus x upon 3 is equal to 1 upon 4 and 1 upon 5 will be transposed plus 1 upon 5 by transposing. तो ट्रांसपोज किया हमने, इसको एलएचएस में ट्रांसपोज किया, इसको राइट साइड में ट्रांसपोज किया with changing their sign, right? Now you can simplify with their operation. It is subtraction, so we will subtract both fraction by taking LCM. LCM is 6. Now 2 3 are 6. It will become 3x. 3 2 are 6. It will become 2x. And here 20 is LCM. 4 5s are 20. 5 1s are 5. 5 4s are 20. 5 4 1s are 4. Like this, right? Next step, we can subtract 3x minus 2x is 1x. That means x. X upon 6 is equal to 5 plus 4. It is 9 over 20. Now in this condition, you know very well, what can we do? We can cross multiply x into 20 and 6 into 9. By cross multiplying, x in 20 equals to 6 into 9. Now next step, 20x equals to x is equals to 54 divided by 20. Now it can cancel by 2. 2 27s are 54 and 2 10s are 20. Now our answer is 27 upon 10. It is the required solution for this given linear equation. If you will put this value over here, then you will get both sides will be same in this condition. तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, वेरिएबल्स को साथ में ले लेना है. उसके बाद आपने क्या करना है, कांस्टेंट को साथ में ले लेना है. जो कांस्टेंट इधर बच गए हैं उनको उधर भेज देना है, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे. फिर उनको आपने ऑपरेट करते हुए चले जाना है, एक्स की साइड को भी और कांस्टेंट की साइड को भी. फाइनली विल गेट आंसर लाइक दिस. This is our question. Now we can see how many variables and constants are there. This one, and this one is variable. So we will separate them to LHS x. It will remain same with sign because it is in LHS, and we will bring this 5x upon 2 on right hand side with changing its sign like this, right? Now here we have 17 upon 6, and we will transpose this 7 to right hand side with changing its sign like this. Our first step is done. Now in second step we can simplify with adding or subtracting each other. Okay, you can assume this x as x divided by 1 because we are adding fractions, so we can replace this x to x upon 1. 6 will be LCM. 1 6 are 6x minus 3 2 are 2 8 are 16x
2 3 are 3 5 are 15x is equals to, here we can assume 1 as denominator, we will get 6 as LCM, 6 1 are 6, 170 are 170, minus 1 6 are 6, 6 7 are 42, like this, right? Now we can operate all three. 6x minus 16x minus 10x minus 10x plus 15x, this is plus 5x. 5 upon x upon 6 is equals to, and 70 minus 42 is minus 25 upon 6, like this. Now we can eliminate this 6 by multiplying 6 both sides, like this. Now we have 5x is equals to minus 25, x is equals to minus 25 upon 5 by dividing both sides by 5. 5 5s are 25 with minus sign 5. X is equals to minus 5 is our answer, right? It is the required solution for this given linear equation. And question number 2 is same as question number 1, so you can try at your home and you can solve this question. Now we'll solve question number 4. Anywhere if you see like this, means both are fraction. Different method by eliminating this 3, but it is rather easy than this method. You will cross multiply at first, right? तो हम यहाँ पर cross multiply पहले करेंगे. How? Let's see. Multiply this x minus 5 by 5 and 3 by x minus 3, like this. चाहे तो आप इससे इसको करें, चाहे इससे इसको करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कम्यूटेटिव रूल आपको पता है. Now we can multiply by using distributive property. 5x minus 25 is equals to 3x minus 9. When you have such condition, then you can separate variables and constant. This and this is variable. 5x minus 3x equals to minus 9 plus 25. क्योंकि माइनस 9 तो आपका आरएचएस में था, उसका साइन चेंज नहीं होगा. जो 25 था इसका साइन चेंज होगा क्योंकि ये इसने अपनी साइड चेंज की है. ये एलएचएस से आरएचएस में गया हुआ है. नाउ सिंप्लीफाई दिस. 5x minus 3x 2x and it will become 16 of plus, because 25 is greater than this 9. It has plus sign. X is equals to 8 is the only solution of this equation. Let's see, in this equation we can see we have 3 variables. First this and this and this. So we can separate these on LHS. 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3, and it will become plus t equals to 2 upon 3. Only we have only one constant, so on right side only we will write only this constant term, which is 2 upon 3, right? Now you can suppose this, we can replace this t as t divided by 1, so that you could take LCM easily. It is LCM 12. Now 4 3s are 12. 3 into 3t minus 2, we'll write like this, minus 3 4s are 12. 4 into 2t plus 3 plus 1 12s are 12 into t 12t equals to 2 upon 3. Now you can use distributive property over here. It will become 3 3s are 90, minus 3 2s are 6, minus 4 2s are 80, and minus plus minus 4 3s are 12.
plus 12t divided by 12 is equals to 2/3. Here 90 minus 80 is 1t or t. 1t plus 12t is 13t. In place of all t, we will write 13t. And next constant term, minus 6 minus 12 minus 18 divided by 12 equals to 2/3. अब क्या करेंगे आप? Only you have a way to cross multiply 3 by this term, 12 by this term, right? तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई 3 into 13t minus 18, 3 into 13t minus 18 and 12 into 2. 13 3 जा 39t, 18 3 जा 54 equals to 24. Now you can transpose this 54 to RHS like this. 39t is equals to 78 and t is equals to 78 upon 39. 39 2 जा 78 and t equals 2 is the required solution for this given linear equation, right? तो इस तरह से करना है. आपने किसी भी स्टेप में कंफ्यूज नहीं करना है. जहां पर जैसे ही आपको डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसपोज करना है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है. तो ये 2-3 चीजें हैं जिन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है. तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई मिस्टेक नहीं होगी और आपका आंसर एकदम सही आएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 6 is same as question number 5, so you can solve it. And I am taking question number 8. It is same as question number 7. So you can try with question number 7. I am going to solve question number 8. You can see here, this is our equation. 15y minus 6t minus 2 into y, 2y minus minus plus 9 to 18 plus 5y plus 5 6 30 is equals to 0. देखिए अब आपको दिख रहा है वेरिएबल अलग अलग दिखने लग गए हैं और कांस्टेंट अलग अलग दिखने लग गए हैं ना. तो अब आप इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या आपने देखना है कि वेरिएबल्स को साथ में लेना है, हमने एलएचएस में ले लें चाहे आरएचएस में ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपने बस सेपरेट करना है, उनको अलग अलग कर देना है. तो हमने देखा कि यहाँ पर एक 15y वेरिएबल है, माइनस 2y इज वेरिएबल प्लस 5y इज वेरिएबल एंड द रेस्ट ऑफ नंबर आर कांस्टेंट. तो यहाँ पर जीरो ही है, ठीक है. तो आप जीरो लिख, यहाँ पर जीरो लिखेंगे नहीं कि जीरो है तो जीरो को लिखने की जरूरत है ही, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. तो आप इसको इधर ले आ रहे हैं आरएचएस में, तो ये 60 हो जाएगा उधर जाके. ये उधर जाके क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा. ये भी -30 हो जाएगा, लाइक दिस. ठीक है. अब आपने इनको ऑपरेट कर देना है. तो ऑपरेट कैसे करेंगे? 15y minus 2y दैट इज 13y. लाइक टर्म आपस में ऑपरेट हो सकते हैं. तो 13y plus 5y इट इज 18y. यहाँ भी अपने ऑपरेट कर देना है. 60 में से 18 लेस करेंगे कितना आएगा? 42. और 42 में से 30 लेस करेंगे कितना आएगा? 12. तो y यूज क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 18 on both side and you will get this answer. And you can simplify, you can reduce this fraction by dividing 2 6 are 2 9 are again 3 2s are 3 3 are. You will get 2/3. It is your answer and required solution for this given equation. In the same way, you can solve question number 9, and I'm going to tell you the solution of question number 10. Here we can use again distributive property. We can write like this: 0.25 into 4f minus 0.25 into 3, 0.05 into 10f
minus 0.05 into 9. Now you can multiply. 0.25 into 4 is 1.00. F minus 0.25 into 3 is 0.75. Similarly, you can multiply here on right hand side. 0.05 into 10 is 0.5f and 0.05 into 9 is 0.45. Now we can separate variables. 1.00 that means 1 f is that means f, ये f ही हो गया और यहाँ f का कौन सा टर्म है, ये है, इसको हम LHS में ले आएंगे तो बन जाएगा 0.5f इक्वल्स टू minus 0.45 प्लस 0.75. इसको हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया. नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट. इट इज एक्चुअली 1f, तो 1 में से आप 0.5 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 ही आएगा. 0.5 ही आएगा. f ऐसे रहेगा क्योंकि वेरिएबल है. इक्वल्स टू, यहाँ अगर अब देखो यहाँ माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा. सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, 0.30. Okay. Now, what is the value of f? f is equals to 0.30 upon 0.5. आप डेसिमल हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका यहाँ पर भी एक डिजिट और बढ़ा देंगे तो डेसिमल हट जाएंगे. 30/50 हो जाएगा ये. ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 3/5. और इफ यू वांट राइट इन डेसिमल तो द आंसर विल बी 0.60. 5 से डिवाइड करेंगे 3 को तो ये आंसर आएगा. ठीक है, इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. और आप इसमें दूसरे मेथड से भी यूज कर सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, इट इज नेसेसरी कि आप ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया हुआ है. तो आप यहाँ इनको फ्रैक्शन में पहले चेंज कर सकते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप डेसिमल की फॉर्म में सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, it was all about this exercise. See you in next video. Till then, take care. Have a nice day.